हम बात कर रहे हैं अर्बन कंपनी की। पिछले 2 दशकों में भारत का संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम आसमान छू रहे आईटी उद्योगों का आधार बन गया है। भारतीय स्टार्टअप ने एडटेक, फिनटेक, ऑनलाइन गेमिंग, ओटीटी, ई कॉमर्स और एंटरप्राइज टेक में विघटनकारी इनोवेशन किए हैं। गौरतलब है कि वैश्विक निवेशकों को उत्साहित रखने के साथ ही यह ऊर्जस्वी इकोसिस्टम ने 34 देसी यूनिकॉर्न और 52 सोनिकॉर्न, जो 2022 तक यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखते हैं, का निर्माण सुनिश्चित किया है। भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम की सफलता की कहानी में से एक अर्बन कंपनी है, जिसने भारत में गैर संगठित होम सेवाओं के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। अर्बन क्लैब ब्रांड नाम के तहत 2014 में स्थापित अर्बन कंपनी एशिया के सबसे बड़ी होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जो अपने वेबसाइट और ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को घरेलू सेवाएं जैसे मसाज थेरेपी, सफाई, प्लम्बिंग, बढ़ईगिरी और सौंदर्य सेवाएं इत्यादि के लिए कुशल पेशेवरों को बुक करने के लिए एक ऑनलाइन बाजार प्रदान करती है। Urban Company was started 6 years back by myself, Varun and Raghav. Varun and Raghav were in the United States. Raghav was working for Twitter and Varun was a consultant with BCG, and I was in Singapore working for BCG. And the three of us came back to India with the vision of setting up our own company, which could be a global behemoth in the world of home services. So we started with the vision of digitizing the world of home services, organizing it, and offering high quality services to end consumers. And in order to do that, we had to train several thousands of service professionals, help them with loans, financing support, product procurement, and a whole bunch of other interventions which would help them become organized micro-entrepreneurs and also make a decent middle class wage of 35 to 40,000 rupees a month. सभी स्थानों पर सेवाओं के उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कुशल और अनुभवी पेशेवरों को गहन प्रशिक्षण सत्रों से गुजरने के बाद ही मंच पर अपनी सेवाओं को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी जाती है। एक बार सूचीबद्ध हो जाने के बाद प्लेटफॉर्म ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार पेशेवरों की पहचान करने के लिए एक मैच मेकिंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। Companies like ours, we are able to, go into the depths. We can aspire to digitally create supply, digitally train supply at scale. We are looking at, we already have 20,000 professionals. We are looking at, how do we kind of scale this up to 1 million trained professionals? And it's a massive and a very tough problem, right? We can, through technology, do what is otherwise not even possible in the traditional brick and mortar world. For example, just delivering over 10 lakh services a month requires us to make sure that the right professional has reached the right customer at the right time. Given this whole pandemic and the safety measures, we can make sure through technology, through image detection and all of this stuff, that people have masks, people have the protective gear with them, people are using the right products. We're able to train a lot of our professionals just by assessing, because there's so much of data which we're able to collect. And I don't think these are possible in the traditional ways. And I think this is where the role of technology fits into the growth story of India. I think it is actually, both dependent. India is only going to grow when there is a much deeper reliance and use of technology, because that's what's going to make, at the grassroots level, innovation happen. It's going to make self-reliance a real dream. And at the unit level, kind of push for growth. 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से अर्बन कंपनी ने भारत के 23 शहरों और दुनिया के 3 देशों में घरेलू सेवाओं के उद्योग को व्यवस्थित और मानकीकृत करने का बेड़ा उठाया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः अबू धाबी, दुबई, सिंगापुर और सिडनी जैसे 4 शहर हैं। प्रशिक्षण, ऋण और प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से होम सर्विस पेशेवरों को सशक्त बनाकर अर्बन कंपनी भारत के आत्मनिर्भर बनने के मिशन और देश में लाखों सूक्ष्म सेवा उद्यमियों के उत्थान में योगदान दे रही है। It is very important for Indians to set up businesses, set up organizations and set up industries that can serve the needs of Indian consumers
as well as be globally competitive. India represents 1/6 of the world's population. So even if we just had to do our fair share, it means that 1/6 of the world's largest companies, 1/6 of the world's manufacturing needs, 1/6 of the world's service needs, 1/6 of the world's engineers, coders should come from India. So my view of Atmanirbhar Bharat is that the young Indians, who are the future of India, should go out there, take risks, set up organizations, set up companies, set up manufacturing plants, and produce not just for India, but with the global world in mind. Urban Company is one such company. We started in India, the bulk of our operations are in India, but today we are taking our product and service global. And we have a global footprint that we are imagining. And we want to be a company made in India, from India, which serves the world. And that, I think, is the mindset with which we need to operate in order to be self-reliant, or in order to be delivering on the clarion call of Atmanirbhar Bharat. We don't just have to be competitive in Bharat, we actually have to be competitive at a global scale. वक्त हो चला है एक छोटे